Assalamu alaikum everyone. I'm Hamza. First of all, I welcome you all in free demo class of spoken English on the platform of Digital Skill Center. Before starting our free demo class, मैं आप सब लोगों के साथ डिजिटल स्किल सेंटर के ऑफिशियल फेसबुक के ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स के अंदर शेयर करने जा रहा हूँ। आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी जो है ना डिजिटल स्किल सेंटर का ये ग्रुप जो है प्राइवेट ग्रुप शो हो रहा होगा। तो इसका लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, क्यों? सो दैट आप इसे ज्वाइन करें और चेक करें यहाँ हमारे स्टूडेंट्स की वर्किंग्स को। हम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल स्किल सेंटर 5 मोस्ट डिमांडिंग स्किल सिखा रहे हैं, जिसमें स्पोकन इंग्लिश, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, अमेजोन बीए और सोशल मीडिया मार्केटिंग के जो है ना कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। और हमारे जो है इंस्टीट्यूट की सबसे खास बात यह है कि हम अपने तमाम के तमाम कोर्सेज अर्निंग अपॉर्चुनिटी की श्योरिटी के साथ ऑफर करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस ग्रुप के अंदर भी जो है ना जाके विजिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ इनरोल स्टूडेंट्स ही ऐड होते हैं और वो अपनी प्रैक्टिकल वर्क्स असाइनमेंट्स वगैरह इसी ग्रुप के अंदर अपनी सबमिट करवा रहे होते हैं। हर जो है ना आपको कोर्स से रेलिवेंट असाइनमेंट्स यहाँ मिल जाएंगी, उनके मेंटोर को प्रॉपरली सबमिट हो जाएंगी, तो आप खुद विजिट कर सकते हैं। अगर आपका लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा तो आप सिंपली फेसबुक के ऊपर जाके डिजिटल स्किल सेंटर लिखें और ग्रुप्स के अंदर आके इस ग्रुप को जो है ना आपको इंटरफेस शो हो रहा होगा। ठीक है, तो इस ग्रुप को आप रिक्वेस्ट सेंड कर दें, हम आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे, आप हमारे स्टूडेंट्स की वर्किंग्स को देख सकते हैं। नो मूविंग टूवर्ड्स ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डिजिटल स्किल सेंटर, मैं आप लोगों के साथ इसका भी यूआरएल चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर रहा हूँ। वैसे आपने विजिट करना हो तो डिजिटल स्किल्स centers.com से हमारी जो है ना ये वेबसाइट है, आप विजिट कर सकते हैं। आपको प्रॉपरली यहाँ जो है ना हमारी प्रेजेंस मिल जाएगी, आपको तमाम कोर्सेज की डिटेल्स मिल जाएगी, फी स्ट्रक्चर के बारे में हर चीज़ जो है ना आपको पता चल जाएगी, किस तरह से हम अर्निंग अपॉर्चुनिटी देते हैं। मैं आपको विजिट भी करवा देता हूँ। यहाँ आपको शो हो जाएगा हमारा मेंटोरिंग प्रोग्राम, ठीक है, और कितने स्टूडेंट्स हम इनरोल कर चुके हैं। 2000 स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो है ना 2000 प्लस ही हो चुके हैं स्टूडेंट्स हमारे इनरोल, और 1900 प्लस स्टूडेंट्स को जो है ना कोर्सेज कंप्लीट करवा दिए गए हैं। 100% सेटिस्फेक्शन रेट है। बाकी आप वेबसाइट को खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवन जो है ना आप हमारे बाकी हमें सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो आप वो भी देख सकते हैं। आपको वेबसाइट के नीचे जो है ना ये चीज़ें भी हमारे लिंक्स मिल जाएंगी। ठीक है, मैंने जिस तरह से आपको स्टार्ट के अंदर बता दिया है कि हमारे कोर्सेज की सबसे खास बात यह है, जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होता है तो हम अर्निंग अपॉर्चुनिटी की श्योरिटी देते होते हैं, और जैसे स्टूडेंट्स का कोर्स कंप्लीट होता है तो उन्हें अर्निंग अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अब आपके प्रॉपर जो है ना डेमो सेशन के जो है ना स्पोकन इंग्लिश के डेमो सेशन को स्टार्ट करने के लिए मैं आपकी मेंटोर मैम बिनते शाइश को जो है ना होस्ट करने जा रहा हूँ। मैम मैं आपको होस्ट करने जा रहा हूँ सो दैट आप जो है आज की फ्री डेमो क्लास को जो है ना स्टार्ट कर सकें। ओवर टू यू मैम। Thank you so much, Sir Hamza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. I am your mentor, Miss Binte Shaish, and I welcome you all to the free demo class of English speaking blinding. I would like to introduce myself first. I am Binte Shaish, and I'm a graduate in English linguistics and literature. I've been serving as a lecturer in one of the prestigious institute of Pakistan, and other than that, I've been working along as a trainer for English speaking and writing. So this was about me. Let's move towards the structure of this course. ये कोर्स डिजाइन किया गया है आप सब लोगों के लिए, so that you people may speak in English fluently and confidently in wherever you want to. So I welcome you all, officially welcome you all to this language course. In this language course, we aim to provide you a quality training which would help you to learn to speak English in front of the people and to present yourself fluently and confidently. So let's move towards the structure of this course. इस पूरे कोर्स में आपको कौन कौन सी लेवल्स के थ्रू आपको सिखाया जाएगा। So अगर हम स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल से, so we would be learning to speak English in everyday situation. किसी भी जबान को सीखने के लिए उसका स्टार्टर या उसका बेसिक लर्न करना बहुत जरूरी है, और कोई भी जबान इंसान तब तक नहीं सीख सकता जब तक वो उसको बोलता नहीं है, अपने इर्द गिर्द के माहौल में लोगों से इंटरेक्ट करके बोलता नहीं है, नए लफ्जों को सीखता नहीं है। सो हम काम करेंगे बेसिक लेवल पर इस एक चीज पर, जहां आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना सीखेंगे इंग्लिश जबान में। सो आप सीखेंगे कि कौन से लफ्ज हैं जो आपको डिफरेंट सिचुएशंस में अकॉर्डिंगली यूज करना चाहिए, और अगर आप किसी भी सिचुएशन में है या कोई भी डिस्कशन हो रहा है, सो व्हाट इज द काइंड ऑफ
vocabulary and what would be the appropriate way for you to speak with people, to communicate with people in the everyday scenario. So we would be working along on this one aspect. Then leading on to it, यानी उसी चीज को आगे लेकर अगर हम जाएं तो हम जाएंगे कम्युनिकेशन की तरफ. Now there are 7 C's of communication, और ये 7 C's काम करते हैं आपको क्लियरली, कॉन्फिडेंटली, कंसाइजली बात करने में. शेक्सपियर का एक एक सेइंग है where he says brevity is the soul of wit. हर वो इंसान जो मुख्तसर बात करता है वो लोगों को एक इम्पैक्ट देता है अपनी जहानत का. तो बहुत ज्यादा इंग्लिश कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लंबे लंबे सेंटेंसेस को यूज करने का जो एक पुराना पर्सपेक्टिव है उसको हम निगेट करते हुए सीखेंगे कि किस तरह से आसान और मुख्तलिफ और मुख्तसर लफ्जों को इस्तेमाल करके हम इम्पैक्टफुली कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को सीखेंगे जो आपको क्लियरली और कॉन्फिडेंटली हर सिचुएशन में, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल सिचुएशन हो, उसमें आपको बात करना सिखाएगी. ठीक है. Then we would be moving towards the last part of the communication section where you'd be learning to communicate verbally and non-verbally. अब अपना आइडिया, अपनी बात किसी की तरफ कन्वे करने के लिए हम सिर्फ लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करते, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ अपने मैसेजेस को क्लियरली कन्वे कर सकते हैं. So we would be working on these aspects कि किस तरह से आप अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी आवाज को, अपने लफ्जों को इस्तेमाल कर सकते हैं क्लियरली अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए. ठीक है. तो इट ऑल स्टार्ट्स विद द कम्युनिकेशन. किसी भी स्पीकिंग कोर्स में कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है. इट इज द सोल ऑफ ऑल द कोर्सेस. So once you learn how to communicate properly, you would be able to understand English, you would be able to use English, you would be able to read English, and communication would really help you to go a long way with respect to speaking English. So starting with communication, we would be moving towards the grammatical portion. अब बोलना हमें मालूम है कि हमने कैसे बात करनी है, आइडियाज कम्युनिकेट कैसे करने हैं. ग्रामर पोर्शन में हम सीखेंगे कि इंग्लिश जबान का स्ट्रक्चर क्या है, लफ्ज और ग्रामर आपस में किस तरह से इस जबान में यूज होती है, उसका सिस्टम क्या है. सो जब आप समझ जाते हैं कि टाइम के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से, हमारे एक्शंस के लिहाज से इंग्लिश ग्रामर हमें हमसे क्या डिमांड करती है, जब आप इस चीज को सीख जाएंगे तो आपके लिए इंग्लिश को समझना, बोलना बहुत आसान हो जाएगा. आसान क्या, ये आपके लिए कॉन्फिडेंस का एक तरीका बनेगा, एक जरिया बनेगा आपके लिए कि आपको पता होगा कि आप जो बात कर रहे हैं वो सही है. So we would be working on the basic grammar of English language, where you would learn about sentences, about parts of speech, about tenses, about active and passive voice, and narration. So moving along, we would be moving towards the communication with people in the classroom and in the real situation का context. What does it mean? Communication हम deal कर चुके हैं. जब हम communication और grammar को सीख जाएंगे तो हम देखेंगे कि हर एवरीडे सिचुएशन में आप किस तरह से बातचीत करेंगे. तो ये एक प्रैक्टिस मॉड्यूल होगा जहां पे आप इंटरसेप्ट्स दिए जाएंगे, आपको एक्सरसेप्ट्स दिए जाएंगे, या आपको स्क्रिप्ट्स दी जाएंगी आसान लफ्जों में. उन स्क्रिप्ट्स को आप पढ़ेंगे अपने क्लास फेलोज के साथ, मेरे साथ, और उसे प्रैक्टिस करेंगे. कम्युनिकेट करना सीखेंगे लाइव प्रोजेक्ट्स के थ्रू. ठीक है. सो in the fourth module we would be practicing practically to speak and communicate in English. Moving along, skills to speak accurately and clearly. Now there comes the modalities of language. इसका एक छोटा सा डेमो हमने इसका एक छोटा सा इस कॉन्टेक्स्ट का डेमो हमने अपनी आज की प्रेजेंटेशन में भी इंक्लूड किया है. Modalities और certainties इंग्लिश जबान में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इंग्लिश जबान में हमें कुछ चीजें अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करते वक्त जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जैसे मैं और आप हैं, जिनकी जबान इंग्लिश नहीं है और वो उनकी सेकंड लैंग्वेज है, उनको अपनी बात कन्वे करने में बहुत कंफ्यूजन होती है कि
कभी कभार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम इस लव्स को या इस कॉन्टेक्स्ट को सर्टन किस तरीके से लोगों तक कन्वे करें. सो मोडालिटीज और सर्टनिटीज लैंग्वेज के आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती हैं और आपको क्लियरली और एक्यूरेटली बात करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं. सो वी वुड बी लर्निंग अबाउट द मोडालिटीज ऑफ द लैंग्वेज इन दैट मॉड्यूल. Now, the last portion that would help you to develop your pronunciation and to let you speak fluently anywhere in front of any person. So, pronunciation, phonetics, phones, and sounds. Now, sounds क्या है? इंग्लिश जबान का जो बहुत सारा एक पोर्शन है, वैसे द एक्सेंट इज समथिंग जो बहुत ज्यादा काउंट होता है. एक्सेंट को डेवलप करने के लिए क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है? एक्सेंट को डेवलप करने के लिए साउंड्स को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कहाँ पे आपने टी को द बोलना है और कहाँ पे टी को थ बोलना है, इस चीज की एक अंडरस्टैंडिंग एक अच्छे इंग्लिश बोलने वाले इंसान को होनी चाहिए. सो टू लर्न दैट, we would be working on and we would be practicing the pronunciation by understanding the phonetics signs in the IPA symbols of the language. International Phonetic Association एक सिस्टम है पूरा जिसने हर साउंड को, इंग्लिश अल्फाबेट के हर साउंड को, हर लफ्ज को, अल्फाबेट को, ABCD को साउंड्स में कन्वर्ट किया है और हम अब अल्फाबेट्स को साउंड्स के थ्रू पहचानते और बोलते हैं. इस तमाम सिस्टम को सीखने के लिए हम अपनी प्रोनाउंसिएशन में इसको इनकलकेट करेंगे और फिर हम उसे प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करना लफ्जों को आ जाए और हम जहाँ पे प को फ नहीं बोलना वहां पे फ बोलकर अपने आप को एम्बैरेस मत करें. सो वी वुड बी वर्किंग ऑन दैट. एंड द लास्ट पार्ट, हम आपकी वोकैबुलरी डेवलप करेंगे. Somewhat advanced, but most part of it would be basic. तो आप basic, intermediate और advanced vocabulary का एक पूरा प्रोग्राम लेंगे which is called VEP, जिसमें आपकी vocabulary को extend किया जाएगा. Now this vocabulary extending program is a program where whatever you have, like in your black box, in your memory, बचपन से लेकर अब तक जो जो लफ्ज आप सीख चुके हैं वो आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा होते हैं. सो हमें कभी कभार पता भी नहीं होता, पर अनकॉन्शियसली ये लफ्ज हमने कहीं पढ़ा होता है, कहीं सीखा होता है, कहीं बोला होता है और वो हमारी मेमोरी का एक पार्ट बन जाता है. VAPs हमें हेल्प करती हैं कि हम उसी वोकैबुलरी को एक्सटेंड कर लें दूसरे लफ्जों के साथ, उनके सिनोनिम्स के साथ अटैच कर रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में उनको यूज करने के काबिल हो जाएं. सो इन दिस लास्ट मॉड्यूल विच इज वन ऑफ द मॉड्यूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में, लिसनिंग में हेल्प आउट करेगा. सो वी वुड बी वर्किंग ऑन द VEP and after that you will be able to completely understand and speak English in any context, either formal or informal. So that would be it. Let's move towards some of the aspects of English language. Before moving towards it, हमारे पास assignment का एक criteria है. One of the questions that we receive being mentors is how would you be creating the assignment criteria? How would you people be marking our skills like spoken English? क्योंकि इसमें हम बहुत ज्यादा लिखते नहीं है, हम प्रैक्टिस करते हैं. सो हमारी ये जो स्किल है स्पोकन इंग्लिश, इसको मार्क करने का क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है. हम आपकी ये 4 स्किल्स जिसमें आप डेवलप करेंगे अपनी वोकैबुलरी, जिसमें आप लफ्ज को पहचानना सीखेंगे, लैंग्वेज को बोलना सीखेंगे, उसका एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज वे में आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा जिसमें आप रीड भी करेंगे और राइट भी करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे अपने सेशंस को और हमारे तक पहुंचाएंगे. आपकी उन रिकॉर्डिंग्स को मार्क किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेवलप्ड स्टैंडर्ड सिस्टम्स एंड देन you would be given a feedback. So let's read out the criteria once. Based on these 4 skills, you would be able to recognize and reproduce letters and other graphic symbols related to the language. You would be able to develop a vocabulary bank, and it would be one of our assignment criteria. You would understand and apply grammar and usage of the grammar in different conventions, यानी उसका rule and everything. सो आपके असाइनमेंट जो हैं वो ग्रामेटिकल होंगी, उनके रूल्स से रेलेवेंट होगी. आप उस रूल्स को लिखेंगे, हमें समझाएंगे और फिर उसे इस्तेमाल करेंगे अपने रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट पे.
So identify and use structural and organizational features common to the English language. Develop the strategies for reading comprehension. It means that it is one of the criteria, right? So we would be giving you some of the greeting passages which you would read, and develop appropriate strategies which are which are used while we are reading. So what does it mean? Let me break it down for you. होता क्या है कि आप लोग हर कॉन्टेक्स्ट को डिफरेंट तरीके से रीड किया जाता है इंग्लिश जबान में. कभी कभार कुछ ट्रैजिक सिनेरियोज होते हैं. समटाइम्स इट इज फॉर्मल, समटाइम्स इट इज नॉन फॉर्मल, समटाइम्स इट इज डॉक्यूमेंटेड. सो हर चीज को रीड करने का एक अपना अंदाज होता है, उसको बोलने का, प्रोनाउंस करने का एक अपना अंदाज होता है, और उसको लिखने का एक अपना तरीका होता है. सो वी वुड बी वर्किंग ऑन ऑल दोज बेसिक स्ट्रैटेजीज जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होती हैं, इंक्लूड होती हैं. तो दैट वुड बी वन ऑफ योर क्राइटेरिया. Some of these strategies may include identifying a purpose for reading. कि आप अगर ये जो चीज है जिसे आप रीड कर रहे हैं, what is the purpose of it? Is it giving you some kind of a moral? Is it teaching you something? It is applying something? Is it kind of predicting something? So you would identify the purpose of the reading first by using the pictures, graphics, and some of the hints or clues that we add into the reading passages. And you would learn how to skim and how to skim and foresee the things. What does it mean? क्या होता है कि कुछ आपको अब 50 pages का डॉक्यूमेंट या 20 pages का डॉक्यूमेंट अगर आपको मिल जाता है, don't worry, I'm not going to give you such long documents, but if you receive a certain document जो बहुत ही लंबा है, तो कुछ क्लूज होते हैं हर डॉक्यूमेंट में, उसको पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं होती. वन ऑफ द मैजिक इज दिस दैट यू वुड बी केपेबल इनफ टू स्किम थ्रू इट. आप उसको कहीं कहीं किसी किसी पोर्शंस को क्लूज की मदद से पढ़कर समझ जाएंगे कि इस पूरे इंटायर डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है. ठीक है, सो ये एक आर्ट है विच यू वुड बी लर्निंग थ्रू द असाइनमेंट दैट वी वुड गिव यू फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस. Remember that it will be hard for learners to understand what they read until they have solid word recognition skills. So कुछ भी understand करना, बोलना difficult होता है जब तक आप recognize नहीं करते उस word को. Therefore, you would learn to recognize the skill, and there would be assignments where your oral vocabulary would be developed and would be nourished. So that would be our assignment criteria. If you have any question, you can drop it down to the chat boxes regarding the assignment criteria. Okay, let's talk about the entire course. I want you people to have some of the understanding by the end of this demo. So, basic skills of English language and their importance. This slide will help you to understand that there are basic skills like reading, writing, speaking, and listening. And out of these 4 skills, speaking and listening are the ones which are considered as more important, with respect to the other ones, in comparison to the rest of the ones. Why? Because ये जो 2 skills हैं, these 2 skills actually help you to take your strong grasp on all the 4 skills, right? So basic skills, reading, writing, speaking, listening, they're all interconnected. तो अगर आप कोई भी एक skill सीखते हैं, तो it is, you should be assured of the fact कि अगर आप reading सीखने जाते हैं तो आप writing, speaking और listening सीख के ही वहां से pass out होंगे. इसी तरीके से if you are learning to speak, you would be learning to read and to listen and to write as well. So these are the 4 basic interconnected skills of English language, and they are really, really, really important. Characteristics of adult English learners. English learners की क्या characteristics होती हैं? ठीक है, क्योंकि किसी भी इंसान पे सबकत हासिल करने के लिए या किसी भी इंसान से compete करने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है. इस वक्त हम इंसान से नहीं, हम जबान से compete कर रहे हैं. So we should understand what this English is. The population of adult English learner बहुत ही diverse है. So हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, ज्यूज, हमारे पास हर तरह के स्पीकर्स हैं जो कि इंग्लिश जबान को बोलते हैं. ठीक है, उनकी जोग्राफिकल लोकेशन, उनकी एज, उनका बैकग्राउंड, हर एक चीज जो है वो इंग्लिश जबान के ऊपर असरअंदाज होती है. दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव सच डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज.
एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि किसी भी इंग्लिश बोलने वाले इंसान पर असरअंदाज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर एज, देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड, time that they have spent in the native countries, in the native places where English is spoken as a language, native language that they speak, कितना टाइम उन्होंने उस जबान को बोला है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है. ठीक है, सो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो असरअंदाज होती हैं किसी भी इंसान पर. तो कोई कितना अच्छा बोल सकता है या कितना कम अच्छा बोल सकता है, उस पर इन तमाम चीजों का असर होता है, इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है. ओके, सो किसी भी इंसान को इंग्लिश सीखने के लिए जो भी टाइम होता है वो वेरी करता है. ठीक है, उसकी उसकी एज पर, उसके बैकग्राउंड पर, लेवल ऑफ लिटरेसी पर, और द फैक्ट कि वो कितना फ्रीक्वेंटली लोगों से उस जबान में बातचीत करता है या इंटरेक्ट करता है. ठीक है, सो किसी भी इंग्लिश को सीखने के लिए या कोई भी जबान सीखने के लिए जो अमाउंट ऑफ टाइम है, दैट इज फ्रॉम 30 to 60 days, depending on the fact if you speak it out. Okay, the more you interact, the more you learn, the more you read their literature. For example, आप उर्दू पंजाबी भी सीखते हैं, तो जितना ज्यादा आप उसको समझते हैं और उसको पढ़ते हैं, उनके लिटरेचर को पढ़ते हैं, उतना ज्यादा आप उस जबान को सीख सकते हैं. ठीक है, सो this is the time that is required to learn and to speak English. And of course, learning to develop an accent, of course, takes some times. But if you practice it honestly, you'd be able to speak in no time with a good accent. Why should you people enroll in English speaking courses around the world? Or why should anyone enroll into the speaking course? Number one is the fact that English is one of the language that is dominated due to political causes and other causes, like they have revolutionized the world. So people all over the world, they understand language. तो अगर आप कहीं पर भी बातचीत करना चाहते हैं या जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको रिक्वायर्ड हैं, तो आपको इंग्लिश जबान आना बहुत जरूरी है. इट इज द कल्चर इन पाकिस्तान एंड इट इज द कल्चर एवरीवेयर इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो जिस इंसान को जो भी इंसान कोर्स में इनरोल होता है, वो उस जबान को सीखने के लिए भी इनरोल होता है, और वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रूमिंग के लिए इस जबान को सीखना चाहता है, बिकॉज दिस लैंग्वेज इज एवरीवेयर इन डिफरेंट फॉर्म्स. आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका एक डिफरेंट फॉर्मेट देखते हैं, आप ऑफिस में उसको एक डिफरेंट फॉर्म में देखते हैं, तो चाहे उसका कोई भी फॉर्म हो, इट एग्जिस्ट everywhere. So you should enroll and you should learn to speak this language because it would give you immense benefit. What are the journal strategies that help anybody like you and me to learn English as a foreign language? There are some journal strategies which people should keep in your mind. Is that number one, you should learn to work on improving your speaking skills by communicate through people. रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लोगों से बातचीत कीजिए और अपनी वोकैबुलरी को और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए. एक तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होती है. सेकेंडली इज दैट यू नीड टू डिस्कस थिंग्स इन डिटेल. ठीक है, सो यू शुड बी ऐसा नहीं है कि आपने 2 सेकेंड या 5 सेकेंड या 60 सेकेंड्स या 5 मिनट तक किसी से कन्वर्स कर लिया तो डेली विल हेल्प यू. नो, you should have deep discussions at least for like 20 minutes to 1 hour. लोगों से deeply engrossed रहिए, बात कीजिए उस ज़बान में, and then that is one of the strategies that help people to learn this language. Third thing is to use visual aids. पिक्चर्स इस्तेमाल कीजिए, मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्लासरूम्स में. इसके थ्रू आप लोग जो हैं इन द बैक ऑफ योर माइंड इंग्लिश का एक इमेज डेवलप कर देते हैं, और उस इमेज के थ्रू आप इंग्लिश जबान को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं. देन कुछ टास्क्स होते हैं और कुछ ऑथेंटिक मटेरियल होता है जो कि सिर्फ इंग्लिश जबान से रिलेटेड होता है और इंग्लिश के ही फॉर्मेट में इंग्लिश लिखने इंग्लिश बोलने वाले लोग ही जिसको लिखते हैं. सो इट शुड बी ऑथेंटिक बिकॉज इट शुड कम फ्रॉम द authentic sources, right? Then what are the qualifications? अगर हम एक ESL learner बनना चाहते हैं, by the way ESL is English for second language learning. So
ESL के लिए बोलने के लिए इंग्लिश जबान को आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए there should be like you should have a basic understanding of English. आपको एटलीस्ट इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, ठीक है? दिस इज द क्वालिफिकेशन. अगर आप उसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं और आपको पता है कि उसका मतलब क्या है, तो आप इंग्लिश को बोल सकते हैं. दैट्स इट, राइट? सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश. यू शुड अंडरस्टैंड कि हमने लेफ्ट से राइट की तरफ इंग्लिश को लिखना और पढ़ना होता है, और हमें up to down move करना होता है while we are reading, and that every word has a meaning. Every word represents a story. So if you can understand the given story, if you can read the story in the proper format, if you can read the English in the proper in the proper format and orientation, voila, you're good to go. आप इंग्लिश सीख सकते हैं, नो मैटर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, या यू आर above 40 years old. So you can learn the language anytime you want to. The 4 key reading skills, reading की जो 4 skills हैं, which is ESL learners need to be good at phonological processing. यानी जब आप sound सुनते हैं, कोई इंसान, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एडवांस लेवल पे अब क्या हो रहा है कि अब आप अल्फाज के थ्रू इंग्लिश को नहीं समझते, आप साउंड्स के थ्रू इंग्लिश को समझते हैं. सो अगर आप उन साउंड्स को प्रोसेस कर सकते हैं अ बैक ऑफ योर माइंड, you are good to go. So this is one of the reading skill. अगर आपकी vocabulary development है, this is the second skill. Vocabulary development is the second key reading skills. So अब जब आप read कर रहे हैं, हमारा बहुत सा portion reading पे मनसर करता है, dependent है, तो vocabulary को कैसे develop करना है, ये हमारी दूसरी reading skill है, और हम उसके accordingly काम करेंगे. Then there is syntactical processing, यानी आपने structure को develop करना है, structure को देखते हुए समझना है, ये हमारी तीसरी reading skill होती है. And the schema activation, कि इसके पीछे, on the back of it, what's the story, what the structure is, and why this exists here. Okay? And we would be talking about all these things in detail in our course, inshallah. Okay, the most important slide of this presentation is scope of jobs for English speakers. No, it's not something that I should explain it to you people. You must be smart enough to understand that English is something that people speak all over the world. And it has immense scope. For example, it has a career as a translator, career as an interpreter. You can become a sales marketing officer. आप कहीं पर भी embassies में job कर सकते हैं, आप फ्लाइट अटेंडेंट बन सकते हैं, क्योंकि हर फ्लाइट में आप जहां पर भी जा रहे हैं वहां पे अगर आपको अरेबिक नहीं आती तो इंग्लिश तो आती है. सो यू शुड be good at English in order to pursue your careers in hotel management, in embassies, as a lecturer, as a teacher. Even if you are a teacher of Urdu language, you should be good at English, because we have English medium schools in majority in Pakistan. So this is the language that would give you benefit wherever you go, no matter which part of the world you would go, it would give you benefit. Moving towards the conclusion, why do we find it difficult to speak English? One of the questions that we receive. ESL learners may have a difficulty learning English language because they have never thought about language as a system. हम हमेशा English language को सिस्टम के तौर पर नहीं समझते. हम उसको सिर्फ एक जबान की तौर पर, जो कि हमारे हमें कॉलोनाइज करने वाले गोरों ने हम पर मुसल्लत कर दी थी. हम कभी नफरत की वजह से, कभी मजबूरी की वजह से इंग्लिश जबान को सीख रहे होते हैं. अगर हम इन सब एस्पेक्ट्स को छोड़ दें, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को साइड पे रख के इसको एक सिस्टम के तौर पर समझें, तो इंग्लिश को सीखना, लिखना, पढ़ना बहुत इतना मुश्किल नहीं है. सो join me to understand and learn to speak English as a system. As a system जहाँ पे language, vocabulary, grammar और sound मिलकर काम करता है. So we would be happy if you people could join us and become a part of us, so that we can help you to develop your oral vocabulary, your phonetical vocabulary, your spoken vocabulary, and to get you going into anywhere, any part of the world as a fluent English speaker. So I've talked about one practice demo here. So let's see how the modalities, yeah, degrees of certainty work. Okay, so let's practice. We see कभी हम जब भी इंग्लिश ज़बान में बात करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो we move towards
from top to bottom and from left to right. ठीक है? So let's divide the certainty level as 100 to 50 to 20. अगर मैं किसी चीज के बारे में 100% श्योर हूं तो मुझे कौन सी वोकैबुलरी इस्तेमाल करनी चाहिए वर्ब के साथ, एक्शन वर्ब के साथ? will. ठीक है? तो मेरा जो भी सेंटेंस होगा वो will से एक्सटेंड करके आगे चलेगा और उससे पहले जो भी एक्शन वर्ब आएगा वो will से पहले आएगा. तो अगर आपके साथ कोई इंसान बात कर रहा है कम्युनिकेशन में और वो will का इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब है वो अपनी बात में 100% श्योर है. ठीक है? So for example, I will come here, I will go to the bar, I will be there. लेट्स सपोज अगर आप कम्युनिकेट करें किसी शख्स के साथ और वो अपने एक्शन वर्ब के साथ में इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब है कि वो इंसान 50% श्योर है. ठीक है? आई मे कम देयर, आई मे रीड दिस बुक, आई मे ईट एट दिस रेस्टोरेंट. तो 50% उसकी सर्टेनिटी आपको शो होगी बाय यूजिंग द मे. सी, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. 20% अगर वो इंसान श्योर है तो he would be using might, right? So these are certain clues which we would practice in our sessions. Okay, so that's how the system of the English language work. Join me to master the system of the English language. I will teach you the correct way to speak English language. Thank you very much, everyone. If you have any question, drop it down in the chat boxes so that we can address them. Over to Sir Hamza. Sir, if you have any question, you can let me know. ओके मैम, थैंक यू सो मच. बाकी कुछ स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं आप पहले ले लें, उसके बाद मैं जो है ना अनाउंसमेंट कर देता हूँ. ठीक है? कोर्स की फीस स्ट्रक्चर के हवाले से सारा कुछ. Sure, sir. Sure, sir. All right. So we have some FAQs of the question, frequently asked question. It is there a scope for English speakers? Of course, there is a scope. English language speakers हमेशा हर जगह required होते हैं क्योंकि English वो ज़बान है जो कि हर native ज़बान के अलावा बोली जाती है पाकिस्तान में, एशिया में, continental areas में, हर जगह. So there is a scope, like आप embassy में काम कर सकते हैं, hotel management कर सकते हैं, sales and marketing में जा सकते हैं. So there is a scope, good scope for English speakers. Will we receive the certificate of the course? Yes, of course. You would receive an official certificate from the platform of Digital Skills Center, जो आप कहीं पर भी अपनी सीरीज में अटैच कर सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं that you have taken an English speaking course. Will you work on improving accent? Yes, we will be working on improving accent through the practice sessions. Will there be any interview practice class in the course? Of course, role play classes में आप लोग interview को practice करेंगे कि कैसे आप interviews ले सकते हैं और उनका answer कर सकते हैं appropriately. Will there be activities to improve reading and speaking? This entire course is based on the activities to improve your reading and speaking. So don't worry, we have covered you people through all the possible corners. That was it, sir. These were some of the frequently asked questions. If there's any other question, do let me know. ओके मैम, थैंक यू सो मच. बाकी कुछ स्टूडेंट्स के पहले क्वेश्चंस क्यूरीज मैं भी आंसर कर देता हूँ. स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं फी स्ट्रक्चर के हवाले से, तो हमारे इस कोर्स की फ़ी 2000 रुपीज़ कोर्स की फ़ी है और ड्यूरेशन जो है वो 1 मंथ ड्यूरेशन है. ठीक है? वीकली 3 क्लासेस हमारी होती हैं. ठीक है? और आपको ऑब्वियसली प्रॉपरली ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, आपके मेंटोर के साथ इंटरेक्शंस होते हैं. ईच एंड एवरीथिंग जो है ना इसी कोर्स के अंदर इंक्लूडेड होगा. जिस तरह से मैम ने पहले भी आपको आंसर कर दिया है, प्रॉपरली सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है. ठीक है? और जितनी भी कोर्स आउटलाइन आपके साथ मैम ने डिस्कस भी की है, ऑब्वियसली हम इस ड्यूरेशन के अंदर आपको जो है ना वो सिखाएंगे. ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड. और बाकी जो स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि अर्निंग अपॉर्चुनिटी, तो ऑब्वियसली जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो हम आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेंगे. ठीक है? जिसमें आप हमारे साथ वर्किंग कर सकते हैं. ठीक है? और अर्निंग कर सकते हैं. ये हमारे इनरोल स्टूडेंट्स के लिए होता है सिर्फ. ठीक है? और बाकी जो क्वेश्चंस किसी के हैं तो वो भी पूछ सकता है. मेरे ख्याल से यही क्वेश्चंस थे फीस स्ट्रक्चर के हवाले से. हाँ, एक और चीज़ कि आपने फीस सबमिट कैसे करवानी है, तो फीस सबमिट जिनसे आपने ये लिंक लिया है वो हमारे ऑफिशियल फ्रेंचाइजर्स हैं. वो आपके साथ ना अकाउंट की डिटेल्स जो शेयर करेंगे वो हमारी ही होगी, डिजिटल स्किल सेंटर की. उसमें मैं आपको प्रॉपरली बता देता हूँ. उसमें जो है जैज़ कैश, इजी पैसा और HBL के अकाउंट, इनमें से किसी पे आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं. और जो तमाम के तमाम अकाउंट के टाइटल्स हैं ना वो मोहम्मद अशरफ के नेम से हैं. ठीक है?
तो अगर मैं आपको जो है ना वो शो भी करवा दूंगा, मोहम्मद अशरफ के नेम से, लेकिन HBL का जो टाइटल है वो मोहम्मद अशरा के नेम से है। अगर मैं आपको यहाँ स्क्रीन शेयर करके शो भी करवाऊँ अकाउंट जो आपके साथ वो शेयर करेंगे, आई थिंक सो, अगर मैं कोशिश करता हूँ अगर शो करवा सकूँ तो। बहरहाल मैंने अकाउंट के टाइटल्स जो बताए हैं वो मोहम्मद अशरफ के नेम से ही हैं। जैज़ कैश, इजी पैसा और HBL के अकाउंट, ये 3 टाइटल्स मैंने बताए हैं, तो वो आपके साथ यही शेयर करेंगे और आप जो है ना इसे प्रॉपरली देख सकते हैं। ठीक है। एंड ऑब्वियसली बाकी अगर आप मैम कुछ कहना चाहें तो। No, sir, thank you very much. You have covered all the aspects, and we would love if you people could join us for this entire course. Thank you very much. Okay, thank you so much. Okay guys, hope to see you in our course. Thank you. Inshallah. Okay, Allah thank you very Hafiz. much, people. Have a wonderful day ahead. Allah Hafiz. Allah Hafiz.